और एग्जाम्पल्स तो वही होता है, पहली क्लास में ऐसा ही होता है। तो दूसरी में हम अब जाएंगे कुछ मेन चीजें कर। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहली चीज मैंने कही थी, यूजुअली मैंने कहा था, अरे कहा, तो मैंने कहा था हम इस तरह से सरफेस को ड्रॉ करेंगे, मतलब सरफेस के टुकड़े को जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। दिस वुड बी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, and it would live inside this R3. So ये छोटा सा पैच है सरफेस का, एंड ऑफ कोर्स इसकी डोमेन होगी मेरा यूवी प्लेन, इसको मैंने यूवी से रिप्रेजेंट किया। तो आई टेक ए पोर्शन, यहाँ का एक पोर्शन है which has been mapped to get the surface patch via the R, यानी इसका पोजीशन वेक्टर जो है इस पॉइंट का वो R है, यानी उसके x y z कोऑर्डिनेट्स हैं which depend upon V, यानी R जो मेरी सरफेस है, it is a mapping here, this surface patch is a mapping from an open subset in R2 which is here, this is my R2 to R3 जहाँ पे सरफेस रहती है। तो ये मेरा U है यहाँ पे ना, ये जो मैंने ओपन सेट लिया है यहाँ पे होगा in my UV plane. So of course this there's a point here, a pair of UV which is maps to a point here, that's इसका position vector R है और ये मेरा UV है, right? So that was my surface। फिर मैंने कहा regular points वो होता है जब RU cross RV ये नॉन जीरो वेक्टर हो। फिर हमने ये भी कहा कि अगर हम चेंज ऑफ पैरामीटर, हमने तरह एग्जांपल्स दी जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट पैरामीटराइजेशन हो सकती है सेम सरफेस को, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी। फिर हमने ये कहा कि टू एंश्योर दैट अगर मेरे पास कोई रीपैरामीटराइजेशन मैप्स हैं, u प्राइम इज इक्वल टू सम फाई uv, v प्राइम इज इक्वल टू साई uv, ये दो मैप्स जो नए पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओल्ड पैरामीटर्स, so then it would send regular points to regular points and singular points to singular points if and only if the Jacobian of phi psi is not equal to 0। इसको छोड़ दो, हम आगे बढ़े। तो वहां मैंने शुरू किया था, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो इस पे मैप होते हैं। सो अगर मैं ले लूं ये वाले पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, राइट, where u is constant, u is not changing, इसको हम बोलते हैं v curve, यानी v खाली वैरी होगा। दिस वुड बी माय v curve, कोई भी इस तरह की लाइन, तो इसी तरह से मतलब इनका मैप यहाँ पे। तो अब जो ये v curve होगी, so this would be a set of points here, so it would be a set of points, let me say it would be a set of points like this। इसी तरह से कोई और लाइन होगी तो it would be a set of points like this। इसी तरह से मेरी u curve होगी, है ना, जिसपे v कांस्टेंट है, इस टाइप के हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से यहाँ पर भी वो लाइंस बन जाएंगी कुछ कर्व्स। तो ये जो यहाँ पे ये कर्व्स बनी, जब मैंने एक वेरिएबल को फिक्स किया, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पर जो ये कर्व्स बनेंगी पैरामीट्रिक कर्व्स। ये जो से मैंने बनी है ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट रेफरेंस कि ये मतलब ये सरफेस जो R3 में, इसमें एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व्स बनेगी when I let one of the parameters be constant, तो उनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक कर्व्स। So let me give the definition। parametric curves की let R is equal to R at view B be the equation of the surface of a surface
तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ जो यूवी प्लेन में हमारी जो डोमेन थी उसमें जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की जो इमेज होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल का एक कलेक्शन ऑफ कर्व्स मिलेगा, वर्टिकल लाइंस का एक और कलेक्शन मिलेगा, उन दो कलेक्शंस को हम पैरामीट्रिक कर्व्स कहते हैं. Now by keeping u constant, okay, now by keeping u constant, that means going along the vertical line, keeping u constant, yeah, or v constant, or v constant, we get curves of special importance. They're important because they provide a sort of a dhancha, a sort of a skeleton for our surface. Special curves called parametric curves. Special importance. Special curves लिख लो. चलो importance. So we get curves of special curves. हाँ वो भी है. Special importance होना चाहिए. Curves में लिख चुका. Anyways, तो इनको बोलते हैं parametric curves. So if v is equal to constant, say, say c, चलो इसको ऐसे लिखते हैं. If v is equal to say c, so a constant, then as u varies, the point r at uc describes the curve called u curve. Or the parametric curve. Simply हम इसको लिख सकते हैं parametric curve v is equal to constant. Okay, and if u is equal to c, r at cv describes a curve as v varies called the v curve, yeah, v parametric curve called the v curve, or simply the curve, the parametric curve v is equal to c. तो ये दो set of parametric curves हैं. The tangent to the u curve in the sense of increasing u is along the vector r sub u. Similarly, ये मैं अभी समझाऊंगा. Similarly, tangent to the v curve in the sense of increasing v, in the sense of increasing v, is along the vector r sub v. So since अब इसका मतलब ये है, since for a regular surface, जो कि हमारी सारी surfaces होंगी, our regular surface Ru cross Rb cannot be equal to 0. So therefore, U curves and V curves cannot touch each. They can intersect, but they cannot touch each other. By that I mean
touch either, they cannot have common tangents, क्योंकि उसका मतलब ये है क्योंकि tangent की डायरेक्शन तो ये है, यानी उनके tangents की डायरेक्शन सेम है, they're collinear, तो which means this would be same. तो पहली बात ये है कि चलो मैं जरा इसको बड़ा करता हूँ अपने सरफेस को, मैं लेता हूँ एक U का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली मेरे यूवी प्लेन में, राइट, V को मैंने कांस्टेंट रखा, राइट, तो ये मेरी U कर्व है, तो दिस इज मैप्ड टू दिस कर्व। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया UV, यहाँ पे फिर पॉइंट आएगा U प्लस सम डेल U, दूसरा इसका नेबरिंग पॉइंट U प्लस डेल U, V फिक्स्ड है, तो अकॉर्डिंगली आई वुड हैव अ पॉइंट हियर इन दिस कर्व R at this point, and then I would have another point, क्योंकि मैं इंक्रीज मैं कह रहा हूँ, अब ये हो सकता है कि ये पॉइंट इसके पीछे आए या आगे आए, तो लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट जो है वो मतलब यहाँ भी आता तो यही होता, लेकिन मैं मान रहा हूँ, मान लो ये इस डायरेक्शन में है, इसका नेक्स्ट पॉइंट U प्लस डेल U, राइट, ये तुम्हें सोचना है ये यहाँ पे कर्व है, मैं इसको एक वेक्टर जोड़ता हूँ, मतलब चलो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं जरा उसको जरा हाईलाइट करता हूँ। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, दिस वेक्टर, ये जो मैंने ये डाला, तो ये बन जाएगा, तुम्हें पता है ना पी क्यू वेक्टर जो होता है वो होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, where these are the position vectors of Q and P. So इसका पोजीशन वेक्टर आर यू वी है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, मतलब ये एक्चुअली है वेक्टर इस तरह से, यहाँ पे एक ऑरिजिन है ना एक्स वाई जेड एक्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसको मैं डिलीट करूंगा वैसे ये डिस्टर्ब करेगा मुझे, दैट्स अंडरस्टूड। सो ये जो वेक्टर है ये पी क्यू है, राइट, सो पी क्यू इज बेसिकली ओ क्यू माइनस ओ पी, तो ये जो ये वेक्टर यहाँ पे है जिसको मैं कह सकता हूँ डी आर या व्हाटएवर, सो बट पी क्यू मेरा जो है PQ vector would be actually R of U plus del U V minus R of UV, and if I divide it by del U, right, it would be same director but scaled version of it, depending upon del U कितना छोटा है, या तो ये बड़ा होगा, right, या थोड़ा सा छोटा होगा, अगर del U less than 1 है तो इससे छोटा, ठीक है। So R sub U जो है वो है nothing but limit of del U approaches 0, R at U plus del U B minus R at U B divided by del U. तो del U को कम करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम इधर पहुंचेंगे, इधर पहुंचेंगे, इधर पहुंचेंगे, और जब बेसिकली del U ऑलमोस्ट 0 होगा तो ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट कोइंसाइड हो जाएंगे, और ये जो है ये होगी RU की डायरेक्शन, राइट। सो बेसिकली जो RU होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, which would be the same, which would be basically tangential to my U curve. Same argument would apply to RV. अब चूंकि ये आपस में अगर ये दोनों कर्व इस तरह से टच करें, RU ऐसे हो या RV ऐसे हो, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे RU और RV की डायरेक्शन सेम हो, तो बेसिकली हम मानते हैं इन द इंक्रीजिंग सेंस ऑफ del U का मतलब है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ तो जब मैं पैरामीटर बढ़ा रहा हूँ तो RU इस डायरेक्शन में है, राइट, वरना इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट दैट्स जस्ट अ कन्वेंशन, हम एक पर्टिकुलर सेंस ले रहे हैं कर्व का कि U जब इंक्रीज होगा तो जिस डायरेक्शन में ये कर्व होगी उसी डायरेक्शन में, मतलब अगर ये इसका दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाता जब मैंने del U को इंक्रीज किया तो मैं मानता RU इस डायरेक्शन में, एनीवेज क्योंकि ऑफ कोर्स फिर साइन चेंज हो जाती तो इसकी डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ जो जो मेरी पैरामीट्रिक कर्व्स है सरफेस पैच पे, जिनको यूजुअली मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो एक की जो डायरेक्शन यहाँ होगी वो होगी R सब U की डायरेक्शन, और दूसरी की होगी RV की डायरेक्शन, एंड ऑफ कोर्स
चूंकि ये अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं है फॉर अ रेगुलर पॉइंट, so I can think of a plane generated by that. Any two, you take all possible linear combinations of any two vectors that do not lie on a line, you generate a plane, right? और वो जो प्लेन होगा उसको हम कहेंगे टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट आर एट यू. ओके, तो नेक्स्ट वही हम डिफाइन करेंगे टेंजेंट प्लेन. अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो आर यू एंड आर वी है वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी आर यू डॉट आर इक्वल टू 0. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेन लूं, बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं प्लेन लूं और उसमें मैं अपना पैरामीटर लूं एक्स एंड वाई सीधे, तो x equal to constant means these lines, y equal to constant means these lines. So these are my parametric curves. अगर मैं x y को पैरामीटर लेता हूं in a plane and they are always mutually orthogonal. And how about अगर मैं polar coordinates लूं r and theta, now I can define a plane in terms of parametrically x as r cos theta, y as r sin theta, right? Sin theta. तो फिर हमें पता है जो अगर मैं थीटा को कांस्टेंट रखता हूं, आई वुड गेट दीज लाइंस थ्रू द ओरिजिन. थीटा से मैं ये थीटा ना जो एक्स एक्सिस के साथ है, तो इस तरह से एक सेट ऑफ लाइंस है. और अगर मैं आर को कांस्टेंट रखूं तो मुझे मिलेंगे सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन. तो मेरी जो सेट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स है, एक सेट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स ये लाइंस थ्रू द ओरिजिन है, दूसरा सर्कल्स है, एंड दे आर आल्सो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया, जब मैं कहता हूँ दो कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं या दो कर्व्स के दरमियान एंगल थीटा है, तो उसका मतलब होता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स हैं उनके दरमियान एंगल थीटा है. तो यहाँ पे वही है, तो दे आर ऑर्थोगोनल बिकॉज़ टेंजेंट्स आर ऑर्थोगोनल at curves of intersection. Or I could have taken another example. If I take my sphere, I hope I can draw it properly, क्योंकि इस पे मुझे अपना कंट्रोल नहीं है. मान लो एक स्फीयर है, अब मैं लेता हूँ ग्रेट सर्कल्स, यानी सर्कल्स ऑफ हैविंग द सेम, क्या बोलते हैं, रेडियस एज द स्फीयर, राइट? उनको ग्रेट सर्कल्स बोलते हैं. यहाँ पे एक और ग्रेट सर्कल, ये डॉट का मतलब ये बोर्ड के पीछे से जा रहा है, ठीक है. और मैं लूँ ये पैरेलल्स सर्कल्स, मतलब जो मेरा मतलब ये ना पैरेलल्स, इस तरह के छोटे सर्कल बड़े सर्कल्स, तो ये भी पैरामीट्रिक कर्व्स बनती है बेसिकली. और ऑफ कोर्स ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगी हर जगह. अगर मैं सर्कल से इसको पैरामीटराइज करूं, वो हम आगे बढ़ेंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कभी कभी क्या होता है आर यू डॉट आर वी इज इक्वल टू 0, उसका मतलब जो है कि पैरामीट्रिक कर्व्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. अब इस थ्योरम के एक्चुअली इस चैप्टर के एंड में हम प्रूव करते हैं कि एक्चुअली हम किसी भी सरफेस को इस तरह से रिपैरामीटराइज कर सकते हैं कि अंडर न्यू पैरामीटर्स ऐसे हों, नए पैरामीटर्स की, उससे जो पैरामीट्रिक कर्व्स बने वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है. इट्स ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ रेगुलर सरफेस टू बी रिपैरामीटराइज्ड इन सच अ वे सच दैट द पैरामीट्रिक कर्व्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. अभी हम वहां नहीं पहुंचे, मैं कह रहा हूं हम वहां पहुंचे. Now then there is tangent plane. Tangent plane का मैंने बोला ही, it is the tangent plane is basically generated by ru dot rv. So अगर मैं लेता हूँ कोई surface का point, right? Say let's call it is ru at v. तो यहाँ पे दो पैरामीट्रिक कर्व्स होंगी, उनके कोई वेक्टर्स होंगे which won't be collinear. तो उससे जो प्लेन जनरेट होगा, right? So so I've got this plane, right? Which is the tangent plane. तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं plane generated by ru and rv at a point r. तो इस पॉइंट पे मैं partial derivatives evaluate कर सकता हूँ r sub u and r sub v. So now if r is any point on this plane, capital R, right? Capital अगर r कोई भी point है इस tangent plane पे, I want to find the equation of the plane, equation of this tangent plane.
So अगर capital R is any point on the surface and R is a particular point जहां पर हम tangent plane ढूंढ सकते हैं, so then this would be always true. ये जो R minus small r है, this vector, it would also lie in that. अगर दो points plane में है तो उनको जुड़ने वाला जो vector होगा वो भी इसी plane में lie करेगा. Furthermore, अगर मैं ये RU cross RV लूं, ये vector, this would be perpendicular to any point on the plane containing RU and R. We always know that. So यानी ये जो ये vector है, this would be RU cross R. अब अगर तुम्हें equation, vector equation of a plane पता हो, that says that if you know a point on a plane, a vector on a plane, and the normal to that plane, या सीधे ही, why should I remind you that? मैं यहाँ खुद ही कर सकता हूँ. तो R कोई भी point हो, this vector R minus small r would be perpendicular to R inverse RV, and R would satisfy this equation. So therefore, which will be the equation of the tangent plane? Equation of the tangent plane at a certain point on the surface, at which point this R equal to R at U. Basically better है कि ये लिखा जाए R minus R at UV, क्योंकि these things would be evaluated at a point and R is my generic point, any point on this plane. The tangent plane would satisfy this equation, where R is a point on the surface जहाँ पे हम tangent plane draw कर रहे हैं. So this would be the equation of the tangent plane. Very easy. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट नोटेशन भी इसकी है, what we call triple scalar product. अगर तुम्हें याद हो, वो तुमने पढ़ा होगा 11th 12th में, उसको तुम फिर से देखो. इस एक्सप्रेशन को this dot this cross this is like this, इसको बोलते हैं triple scalar product. ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को हम बहुत यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. You get it revised immediately. आज ही तुम इसका देखोगे. वो 11th 12th में तुमने पढ़ा होगा, शायद ग्रेजुएशन में भी कहीं पढ़ाया होगा, लेकिन 11th 12th में तो है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर्स. इट इज अ नोटेशन फॉर, यानी हम लिखते हैं A डॉट B क्रॉस C को हम ऐसे लिखते हैं A कॉमा B कॉमा C. अब इसका ये है कि दिस इज आल्सो सेम इक्वल, दिस इज आल्सो इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C. This is also equal to minus B cross A dot C. Because this is a determinant, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसकी properties को तुम check करो, क्योंकि मैं सारी properties revise नहीं कर सकता यहाँ पे. Okay. Now, अभी तक हमें पता चला कोई surface है, वहां पे हम tangent plane draw कर सकते हैं, which is generated by some vectors RU and RV. By that I mean they form a basis. और इसको हर पॉइंट पे एक नॉर्मल वेक्टर है, which is normal to the tangent plane. इसको हम बोलते हैं normal to the surface at this point. आपको सी जो पॉइंट है यहाँ पे, it is R at UV, and this surface patch lies in my X, Y, Z axis. Okay. Now we define this normal. Now this is very important. ये हमारी basis है आगे के काम की, कि we define the unit normal and normal to the surface, normal to the surface at point R at UV is defined as just n unit vector. Just take RU cross RV divided by its magnitude, so that इसका length 1 हो जाए. इसको normalize करते हैं, और हम ये कर सकते हैं for a regular surface, क्योंकि ये 0 नहीं है.
ये अंदर वाला वेक्टर जो है वो 0 नहीं, तो इसको हम यूनिट नॉर्मल बोलते हैं. And of course, if you want to find the equation of this normal line which passes through the normal at this point, यानी जो line है वो तुम derive कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? तुम्हें इसकी direction पता है, तुम्हें इसका point पता है. यानी equation of this, अगर r है कोई भी point इस पे, तो equation of this normal line would be r equal to ये जो point है वो इस line पे रहता है, जो तुम्हें पता है, because you are given the equation of the surface plus lambda times इसकी जो direction है वो क्या है, RU cross RV, lambda is any number, so this would be the equation of the normal line. तो अगर तुम्हें derive करना हो कभी तो तुम equation of the tangent plane निकाल सकते हो, equation of the normal निकाल सकते हो. ओके, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं करने की, हाँ, बट इतना काफी है. ओके, अब ओके, तो एंड इसमें यूनिट नॉर्मल. अब हम ये करेंगे, अगर कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ पैरामीटर्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स से सरफेस की इक्वेशन बदलेगी, आर यू बदलेगा, आर वी बदलेगा, पैरामीटर्स बदलेंगे लेकिन सरफेस सेम रहेगी. रीपैरामीटराइजेशन का मतलब क्या है? आई हैव चोजन सम रीजन इन सम प्लेन and I get a certain surface under certain equation, right? तो फिर दूसरा मैं ले रहा हूं कोई दूसरा रीजन किसी प्लेन का, और अंडर सम अदर इक्वेशन आई गेट द सेम सरफेस. यानी यहाँ पे कोई r है, यहाँ पे कोई r टिल्डा है, तो डिफरेंट रीजन्स would give rise, या different equations would give rise to the same surface. वही होता है रीपैरामीटराइजेशन. तो अगर ये प्रॉपर है, यानी प्रॉपर होने का मतलब ये जो ये पैरामीटर्स है इनमें एक रिलेशन है आपस में, u प्राइम इज मान लो ये मेरा है u प्राइम v प्राइम, वो मेरा है uv. अगर इनको जोड़ने वाला जो रिलेशन है इन पैरामीटर्स को, लेट्स कॉल इट phi uv एंड v प्राइम इज इक्वल टू psi uv. अगर अगर तो तो अगर इसका जैकोबियन जो है वो 0 नहीं है इस पैरामीटराइजेशन, तो क्या होगा? जो इस फॉर्मूला के अंडर, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट रेगुलर था, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से भी वो पॉइंट रेगुलर ही रहे. बिकॉज व्हाट आर दीज? दे आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, टू डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द सेम सरफेस, तो वो चेंज नहीं होगा. अब हम ये दिखाएंगे कि जो हमारी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जिसमें जैकोबियन 0 नहीं है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये जो सरफेस नॉर्मल पहले फॉर्मूला से हमने इवैल्यूएट की, या तो वो सेम रहेगी, राइट, या फिर सारी की सारी नीचे आ जाएंगी, मतलब वो फ्लिप करेंगे. मतलब जो रीपैरामीटराइजेशन है वो सरफेस को थोड़ा उल्टा कर देगा. यानी या दूसरा फॉर्मूला जो होगा उसमें जब हम निकालेंगे इस यूनिट नॉर्मल, सो इट वुड या तो टोटली सारी फ्लिप हो जाएंगी या सेम डायरेक्शन में. तो वो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बस just by using some chain rule. Okay. Also, चलो theorem में लिखते हैं. The proper parametric transformation either leaves every normal unchanged or reverses its direction. Proof. Proof भी इसका easy है. Let R equal to RHUV RHUV be the equation of a surface
of a surface and let the relations u prime equal to phi of uv and v prime equal to psi of uv give a proper, by that I mean iska Jacobian zero nahi, proper parametric transformation. Parametric transformation. Now, by chain rule, R sub u, which is del R by del u, can be written as del R by del u prime into del u prime by del u plus del R by del v prime into del v prime by del u, which is R sub u prime into del u prime by del u plus R sub v prime into del v prime by del u. And similarly, Rv would be equal to, by chain rule, Ru prime del u prime by del v plus del v prime, sorry, Rv prime del v prime by del v. So जैसा कि हमने last time किया था, R sub u cross R sub v, मैंने वो बताया था, is equal to R sub u prime cross R sub v prime multiplied by the Jacobian. Multiplied by, let me write it as Jacobian को कैसे लिखूं? ऐसे लिखते हैं, del u prime v prime del u v, that is equal to R u prime cross R v prime into, let's call it Jacobian of u, where of course Jacobian हम लिख देते हैं is equal to del determinant del u prime by del u prime by del v prime by del v prime by del. This determinant का नाम है ju. Now this is non-zero, so it gives me basically h times n is equal to j into Jacobian of uv into h prime times n prime, where of course n prime is equal to Ru, the surface normal जो हमारी होती है, Ru prime cross Rv prime divided by Ru, right? And h prime is equal to this, and remember this quantity. H मैंने किया तो magnitude of this Ru cross Rv, and n जो है वो accordingly Ru cross Rv, the surface normal under the first parameterization जो हमने पहले वाले formula से निकाला, and h is nothing but the length of the sea. यानी कहने का मतलब just हम शायद आगे भी यूज करें, hn जो है हम लेते हैं Ru cross R. Okay, so what does that mean? Let's call this equation, right? Now clearly h and h prime are always positive because they are lengths of a non-zero vector. ये तो कभी zero हो ही नहीं सकते. And since also चूंकि हम मान रहे हैं ये, since the parameterization is proper, या reparameterization जो है जो हमने की है, हम मान रहे हैं, मैंने क्या लिखा, reparameterization is proper, इसका मतलब ये जो Jacobian है ये भी non-zero है.
ओके, सो अगर मैं 1 को देखूं, ये नॉन जीरो है, राइट, ये भी पॉजिटिव है, राइट, ये पॉजिटिव है, यानी इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जीरो कभी नहीं होता, और ये दोनों साइड्स बराबर है। तो और ये जो जैकोबियन है, इट इज ऑब्वियसली अ कंटीन्यूअस फंक्शन बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एंड दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये जो u prime v prime, they're all differentiable functions, therefore their partial derivatives are continuous. So क्योंकि ये सारे के सारे continuous हैं, तो इनका जैकोबियन जो होगा वो भी continuous function. So it would be a continuous function from u prime v prime. Now this would be a real number, a non-negative real number. Not necessarily non-negative, a real number which is not zero. So that means अगर ये दोनों बराबर है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है जो जीरो अटेन नहीं करती। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है थ्रू आउट और वो जीरो एज्यूम नहीं करती, उसका मतलब ये है कि या तो वो थ्रू आउट पॉजिटिव होगी या वो थ्रू आउट नेगेटिव होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसी है जो कभी इसको क्रॉस ही नहीं करती, यानी कभी जीरो होती ही नहीं, तो ये वाला रीजन उसके लिए फॉरबिडन है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता वो आधी इधर हो और आधी इधर हो। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, उसको बीच में से गुजरना पड़ेगा। सो वही हम यूज करेंगे, सिंस आई कैन से व्हाट del u prime and और क्या था वहां पे, del u prime by del v, basically u prime है क्या, it is phi of uv which are basically reparameterizations, therefore they are bijections between the regions that are differentiable both ways. Differentiable का मतलब ये होता है for multivariate calculus में that the partial derivatives must be continuous. तो ये जो partial derivatives है u prime के और v prime के, और continuous, तो इनका जो जैकोबियन होगा वो क्या है, that is sum and difference, है ना। जैकोबियन है क्या, this is this into this minus this into this, so it is basically sum and product of continuous functions. Therefore J is a continuous function that does not vanish, and therefore what, J is positive always or J is negative always. उसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, या तो ये थ्रू आउट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका मतलब n और n प्राइम का या डायरेक्शन सेम है या उल्टा है। therefore either n has the same direction as n prime or reverses throughout हर जगह, और n and n prime have opposite direction of throughout। तो इससे हम इसको खत्म करते हैं। तो मुझे इसकी अटेंडेंस भी भेजोगे, वैसे ये खत्म होने वाला है, इट्स लेस देन 1 मिनट। जी सर। ओके, फिर से ज्वाइन करो जल्दी से। इसका अच्छा, इसका अच्छा